So the next topic that we are going to discuss is biodiversity, conservation, environmental issues. Okay, environmental issues that already you have studied. For example, soil pollution, water pollution, air pollution. Okay, so we will not be going in much detail, but we will cover the biodiversity. Bio means living. Diversity, you understand, that means there are different type of living organism on the earth, and that is referred as biodiversity. Variety of living organism. Okay, that is called as biodiversity, right? Now diversity is a variety. Okay, and this variety is called as biodiversity. Bio का मतलब क्या? Living. Okay, now this terminology, it was coined by Walter Rosen. मतलब ये जो टर्म है ना बायोडाइवर्सिटी, it was given by the Walter Rosen but popularized by Edward Wilson. Are you getting? So you can see term popularized by the Edward Wilson. Okay, दिख रहे दो हैंडसम लोग. Okay, पहला ये कौन है? वॉल्टर रोजेन, जिसने क्या किया? टर्म दिया. कौन सा टर्म दिया? बायोडाइवर्सिटी. दूसरा कौन है? एडवर्ड विल्सन, राइट? नाउ टुडेज बायोडाइवर्सिटी आउटकम ऑफ 3.5 बिलियंस ऑफ ईयर्स ऑफ इवोल्यूशनरी हिस्ट्री. नाउ देखो, अर्थ ओरिजिनेटेड अराउंड 4.6 बिलियन ईयर्स अगो. उसके बाद में लाइफ आया ऑन द अर्थ. ओके, एंड इट टुक अराउंड 3.5 बिलियंस ऑफ ईयर. So whatever the organism that we can see today, they are because of the continuous process of evolution. Are you getting? Now there are three levels of diversity. पहला है genetic diversity, second is called as species diversity, and third is called as biological diversity or ecological biodiversity. Now genetic diversity is at the genetic level. Okay, it is at the genetic level. Okay, whereas species diversity is because of the different species, and then there is what? Ecological diversity is related to different type of climatic condition, adaptation, and the vegetation as well as animal which are present. Now first we will talk about genetic diversity. It is intraspecific. Intraspecific matlab within a species. Okay, it is what? Intraspecific. Now can you see, this is the plant which is called as which is known as Raufolia vomitoria. Raufolia vomitoria. Now ये क्या है? This plant से we make a compound which is very useful in case of, this is a drug called as reserpine. Okay, now this reserpine is used for treating the disease, right? Now you can see this is a plant. अब ये plant किधर मिलता है? It is normally found at Himalayan region. अभी आप देखो, अभी the plant which is growing in different region, they are going to show the different potency. Potency मतलब क्या? कुछ कुछ जगह पे वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेट है, कुछ कुछ जगह पे क्या है? लेस कॉन्सेंट्रेशन. आर यू गेटिंग दिस? सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? इट इज द पोटेंसी. दो द प्लांट इज सेम. वो जाने दो. इधर देखो, कैन यू सी देयर आर मैंगो वैरायटीज. ओके, इफ यू कैन रिमेंबर दिस, मैंगो का साइंटिफिक नेम इज मैंजीफेरा इंडिका. एम आई करेक्ट? मैंजीफेरा इंडिका इज द साइंटिफिक नेम. ये सबका साइंटिफिक नेम है, लेकिन उसमें वैरायटीज है ना. मतलब क्या? कैन यू सी, दिस इज अल्फोंसो, दैट इज नथिंग बट हाफूस, राइट? ओके, तोतापुरी. देन देयर इज बांगापल्ली, आंध्र प्रदेश का है. देन यू कैन सी दशेरी, उत्तर प्रदेश, राइट? उसके बाद में हिमसागर, वेस्ट बंगाल. ओके, उसके बाद में केसर. केसर क्या है? गुजरात. ओके, लंगड़ा, हाँ, इट इज अ वैरायटी called as उत्तर प्रदेश. उत्तर प्रदेश का अंबिका, मालगोवा, that is तमिलनाडु, this TN कर्नाटका. वनराज, गुजरात. सुवर्ण रेखा, that is आंध्रा एंड ओडिशा. एंड हिमाचल बिहार में चौसा. तो ये अलग अलग वैरायटीज है ना. लेकिन देखो, वैरायटी मतलब क्या? उसमें टेस्ट अलग है, ये सर नो. बाकी तो जीनस स्पीशीज सेम है ना. राइस का भी वैरायटी होता है कि नहीं? कौन कौन सा है? बासमती है, कोलम है, बराबर कि नहीं? अंबे मोहर फॉर एग्जांपल. देयर आर वैरायटी ऑफ द राइस आर देयर. ओके, तो बासमती का 27 वैरायटीज है. आर यू गेटिंग दिस? देयर आर 27 डॉक्यूमेंटेड वैरायटीज ऑफ द बासमती. लेकिन सबका जीनस स्पीशीज सेम है कि नहीं? तो जीन में कुछ चेंजेस हुआ है, उसके वजह से क्या है? वैरायटी प्रोड्यूस हुआ है. आर यू गेटिंग? तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? जेनेटिक लेवल. इजी है. देखो, diversity in number and the type of genes as well as chromosome present in different species, also variation within a population that are associated with adaptation to local condition. वो जाने दो. ह्यूमन बीइंग,
व्हाट आर वी? होमो सेपियन सेपियन। लेकिन देखो इंडिया में दिखने वाले ह्यूमन अलग दिखते हैं, अफ्रीका के ह्यूमन अलग दिखते हैं, ये सर नो है ना तेरे अफ्रीका में गर्लफ्रेंड? ओके, किधर जाएगा? होनोलुलु, युगांडा, हाँ वाकांडा फॉरएवर, हाँ ओके। उसके बाद में यू गो टू द अमेरिका, उनका कलर अलग है, टेक्सचर अलग है, फीचर्स अलग है, आर यू गेटिंग? यू गो टू द अफ्रीका, यूरोपियन, अमेरिकन, लैटिन अमेरिकन, आर यू गेटिंग? सो देयर आर व्हाट डिफरेंट, नाइजेरियन, वही ना अफ्रीका में है ना, ओके। तो फैंटेसी देखो, हाँ ना, ऑल दीज आर व्हाट, दैट इज ह्यूमन ही है ना, लेकिन कलर अलग है, फीचर अलग है, आईज पैटर्न अलग है, नोज पैटर्न अलग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अफ्रीका के प्लेयर्स देखो, कौन सा प्लेयर फेवरेट है? हाँ साउथ अफ्रीका कौन सा प्लेयर बोलो? हाँ, और वो सिक्सर मारने वाला कौन? हाँ क्रिस गेल, कौन से है? नहीं क्रिस गेल किधर का है वो बताओ? वेस्ट इंडीज, बरा कि नहीं? उसका फीचर देखो, एंशियंट ह्यूमन जैसे दिखते हैं कि नहीं वो लोग? वेस्ट इंडीज के प्लेयर देखो, बरा कि नहीं? उनका देखो आईब्रो रिजेस आर बिगर, वैसे एकदम अलग है कि नहीं फीचर? यस और नो? तो दैट इज बिकॉज ऑफ व्हाट, दैट इज जेनेटिक लेवल में डिफरेंस है। तो ये पहला वैरायटी क्या है? आई एम नॉट बीइंग रेसिस्ट, लेकिन मैं बता रहा हूँ राइट कि अलग अलग फीचर हो सकते, समझ में आया कि नहीं? ओके, रशियन अलग फीचर है कि नहीं? हाँ देखो, ओके। चाइना, नेपाली, रातपाली, दिनपाली, माहिती आहे ना आम्ही नेपाली, हाँ ओके, हाँ हाँ। नाउ gene variation lead to the individual differences within a species, lead to the evolution, also improve the chances of what continuation of the species in that is changing environment condition. Now existing of the subspecies races, तो human का race है, African is a race, European is a race, Asian is a race, are you getting this? Now there are 50,000 varieties of the rice or the wheat in India, there are 1,000 varieties of the mangoes, are you getting? So this is the drug which is called as reserpine, which is obtained from Raufolia vomitoria, and that is used for treating what? The disease. Now show the variation in terms of the potency and concentration of active chemical. तो हर एक जगह पे है ना, अगर आपने उसका एक्टिव केमिकल दिखा, उसका कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग होगा, आर यू गेटिंग? सो इट इज फाउंड इन द हिमालय इटसेल्फ, ओके। नाउ ये पहला डाइवर्सिटी इज क्लियर टू यू। सेकंड डाइवर्सिटी इज कॉल्ड स्पीशीज डाइवर्सिटी। स्पीशीज डाइवर्सिटी मतलब क्या है पता है आपको? पता है इंडिया में दो घाट्स है, वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट, ओके। वी आर इन द वेस्टर्न घाट, एंटायर कोकन रीजन इज इन द वेस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट का अगर आपने स्पीशीज डाइवर्सिटी देखा, मतलब वहां पे फ्रॉग का पॉपुलेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू द ईस्टर्न, मतलब कि आप डाइवर्सिटी किधर है पॉपुलेशन का? दैट मीन्स एनिमल का डाइवर्सिटी इज मोर इन वेस्टर्न घाट एज कंपेयर टू द ईस्टर्न घाट, दैट इज कॉल्ड एज स्पीशीज डाइवर्सिटी, आर यू गेटिंग? फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर आप एवरग्रीन फॉरेस्ट में जाओ, वहां पे स्पीशीज का डाइवर्सिटी ज्यादा होगा कि नहीं? लेकिन अगर आप डेजर्ट में जाओ, डाइवर्सिटी कम है कि नहीं? एम आई करेक्ट? when you are going to go to the drastic condition like desert, cold region, diversity is less, am I correct? So it is an interspecific diversity, number of the species of the plant animal that are present in the region constituted species diversity, deals with the variety of the species and number of individual of species. Species diversity richer in some region than the other region, समझ में आया? Okay, so you know different varieties of the dogs, there are different breeds, लेकिन उसका जीनस स्पीशीज तो सेम है, अगेन जेनेटिक डाइवर्सिटी, समझा कि नहीं? ओके, amphibian species of the diversity is more in western than the eastern Ghat. Natural undisturbed tropical forest, okay, have the greater species richness. Species richness मतलब number of species are more, okay, than the monoculture plantation of the timber plant developed by the forest plantation. मतलब सपोज एक जगह पे मैंने पूरा टिक का प्लांट लगाया, टिक यू अंडरस्टैंड, साग, ओके, उसका साग का मैंने पूरा पेड़ लगाया, पुष्पा देखा, रक्त चंदन याद आ रहा है कि नहीं? ओके, अगर मैंने उसका ही प्लांटेशन किया तो डाइवर्सिटी क्या मिलेगा? कुछ नहीं, आर यू गेटिंग? लेकिन नेचुरली अगर कुछ ग्रो हो रहा है तो यू विल गेट व्हाट? अगर अनडिस्टर्ब है, वहां पे कटिंग नहीं है, ग्रेजिंग नहीं है, तो वहां पे क्या होगा? यू विल गेट व्हाट? मोर डाइवर्सिटी। इजी है ना? In India, among 15 nations that are rich in species diversity,
उसके बाद में आता है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। नाम से पता चलता है कि नहीं? इंडिया में देखो डेजर्ट्स है, यस, एवरग्रीन फॉरेस्ट है, यस, डेसिडियस फॉरेस्ट है, यस, हिमालयन रीजन मतलब कोल्ड डेजर्ट है, यस, आर यू गेटिंग? सो देयर आर सो मेनी डिफरेंट इकोलॉजिकल कंडीशंस। दिख रहा है ये? दैट इज, दिस इज द रीजन, okay, you can see there are, this is the America part, right? You can see the different region has got different variety, वो जाने दो। when you are near the seashore, okay, you have the more diversity, but when you go up, diversity is going to decrease, are you getting? higher altitude में आपको diversity कम मिलेगा as compared to the lower altitude। समझ में आया? देखो, related to different type of ecosystem within a given geographical area, ecosystem having the distinctive interlinked species based on the difference in habitat. So habitat ka diversity is called as ecological diversity, right? So there may be one or many different type of ecosystem in the region. In India, variety of ecosystem present: desert, rainforest, deciduous forest, estuaries. What is estuary? Where the fresh water and marine water is going to mix. Okay, you know Bangladesh or Sundarban. What is Sundarban? It is the largest delta. Okay, again that is what having the swampy region. It is rich in mangroves. That is a different what you can say, the habitat. Okay, wetland, grasslands are there. Okay, so these all are considered what? The ecological diversity. Okay, so Western Ghats shows a great diversity than Ladakh and Run of Kutch. Easy? Any doubt? Any query? So this is all about what? Types of diversity. Okay, so you can see this is genetic diversity at gene level. Species diversity is different in the species number, and ecologically is different in case of their habitat and ecology. Any doubt? Any query? Yes, this is clear to you? Okay, so first we will write down this and then we will start with pattern of the biodiversity. That means how the biodiversity is distributed. Okay, now look at this. Can you see this is the equator region? Equator region, even the, that is India comes near the equator region, right? Now when you talk about what equator region, this equator region, whatever the countries which are located near the equator region, so there is most of the chances of that there is higher precipitation. Rainfall is more. Precipitation matlab rainfall. So there is more rainfall. There is comparatively stable climatic condition. Species diversity is more. But when you move toward the polar region, okay, so diversity will keep on decreasing. So at polar region, you will get minimum diversity. Are you getting? Or the people who are living near the polar region, so they are going to, or not people, the, what you can say, the animal which are living near the polar region. Okay, so there is, their different diversity is there, plus, okay, their size is also different. So the individual or the animal which are living at the polar region, they are comparatively bigger in size. You take polar bear, it is bigger as compared to the bear which is present in India. Are you getting? Sloth bear. Okay, so this is the diversity called as the latitudinal diversity. Are you getting this? Okay, so species richness higher at lower altitude and steady decline toward the poles. Okay, factor favorable for the speciation. What is speciation? Formation of new species. नया species form होने के लिए क्या चाहिए? Less climatic condition. Okay, then variability of the sunlight. Lesser migration in tropic have reduced the gene flow between the geographically isolated region and favored speciation. Now in tropic condition में we are living in the tropic, right? Availability of the more intense sunlight ज़्यादा है, warmer temperature, higher annual rainfall, more or less constant climatic condition, abundance of resources, मतलब food बहुत है, okay, space is more, so that is abundance, and species richness is more as compared to the temperate. Temperate में ऐसे नहीं है, temperate में क्या है, there is high fluctuation in the temperature, it sometimes it go below the zero, okay, which cannot be tolerated by all the species. Okay, so species richness at the equator at the low pole, right? Colombia near equator कितना species है देखो, 1400 species of the bird. India 1200 species of the bird. New York 105 because it is near the polar region. Okay,
Now Greenland only 56. Are you getting this? So forest in the tropical region like Ecuador. Ecuador के पास क्या है? That is 10 times more vascular plant as the forest of USA. मतलब यूएसए के अंदर जितना फॉरेस्ट है उससे 10 टाइम ज्यादा प्लांट किधर है? दैट इज इक्वेडोर. आर यू गेटिंग? नाउ इन अमेजन फॉरेस्ट, यू नो अमेजन फॉरेस्ट, they are called as lungs of the earth. Okay, now they are going to release more amount of oxygen. Now they have 40,000 plants, 3,000 fish, 427 amphibians, 378 reptiles, more than 300 species of the birds, 427 mammals, and 1,25,000 invertebrate present over there. So species diversity is very high. Okay, because Amazon forest is again come near the equator region. Are you getting this? Okay, now this is called as altitudinal gradient. So near the seashore, you can see tropical rainforest. Okay, there is what more species richness, but when you go up, temperature is going to decrease. So species richness is going to decrease. Okay, so there is a relationship between the species richness. Okay, more is the area. There is more is a relation. More is a species richness. अगर area ज़्यादा है, so number of species are more. That is given by a scientist which is called as Alexander von Humboldt. He observed that species richness does increase with the increase in the area, taken up to the limit. अगर for example रशिया कंट्री, एरिया बहुत ज़्यादा है but temperature is very low. You getting? So you get the curve which is a rectangular. Can you see there is a rectangular curve? दिख रहा है यहाँ पे? This is a rectangular curve. Are you getting this? Yes. Now when you take the log of this equation, you will get what? That is straight line. मतलब क्या है? As there is increase in the area, there is increase in species richness. So initially it is hyperbola, but when you take what log, you will get what? That is this equation. It was given by Arrhenius, but modified by Gleason in 1922. Okay. So S stand for species richness, A stand for area under study, C is a y-intercept, and Z is the slope of the line. Okay. Now smaller areas, values of the Z between 0.1 to 0.2. So take Mumbai for example. Okay, smaller areas, right? Now for the larger areas like continent, you take Asia as a continent. कितना value आएगा? It is in the range of 0.6 to 1.2. Okay, for frugivorous मतलब those who are fruit eating. Okay, birds and mammals, tropical forest of different continent, the slope is found to be 1.15. Are you getting? Okay, so that is the relationship. Now can you see there are two communities? ठीक है, दो communities है. Communities is what? It is a group of population. Okay, ये community and ये community में देखो species same है. Species richness is same. 4 species. Am I correct? इधर equal है कि नहीं? 25%, 25%, 25%, 25%. यहाँ पे क्या है? 6%, 12% है. That means there is no equal. These species are not equal in number, but they are equal in number. So I will say that species richness same है because 4 species है, but species evenness is different. Can you see this? They have different evenness. Number are different. So getting species 4 species है. वहाँ पे क्या है? For example 100 species है, तो हर एक का 25-25 प्लांट है. यहाँ पे ऐसे है क्या? नहीं ना, अलग अलग है. So here it is species richness same है, but evenness is different. Are you getting? Okay. Now why there is important of the species diversity? There is a first hypothesis called as productivity stability hypothesis. First hypothesis क्या है? Productivity stability hypothesis. Now a community is stable. Community मतलब मैंने क्या बोला था? Group of population. See, human population, tiger population, lion population, मैंगो ट्रीज पॉपुलेशन. आर यू गेटिंग? सबका पॉपुलेशन एक साथ, उसको क्या बोलते हैं? कम्युनिटी. तो ये कम्युनिटी स्टेबल कभी होगा? इफ द एवरेज बायोमास प्रोडक्शन रिमेन कांस्टेंट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. मतलब उसका एवरेज बायोमास क्या होता है? कांस्टेंट रहता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. नाउ इट शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू विथस्टैंड डिस्टर्बेंस एंड रिकवर क्विकली. मतलब देखो, फॉर एग्जांपल यू टेक वन नेशनल पार्क. ओके, वहां पे कुछ फायर, दैट इज फॉरेस्ट फायर हुआ. फॉरेस्ट फायर हुआ मतलब आग लग गया कि नहीं? लेकिन वो आग बुझने के बाद इट हैज टू रिकवर बैक वेरी क्विकली. तो उसका क्या है? दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? प्रोडक्टिविटी स्टेबिलिटी हाइपोथेसिस. देखो
It should be strong enough to withstand disturbance and recover quickly. It should be resistant to invasive species. Invasive मतलब foreign species. फॉर एग्जाम्पल इंडिया में अगर कोई दूसरे कंट्री का प्लांट लगाया तो वो एकदम जल्दी ग्रो नहीं होना चाहिए, आर यू गेटिंग? तो उसको क्या बोलने का? इन्वेजिव स्पीशीज, वन विच इज नॉट बिलोंग टू दिस लैंड. ओके, अकॉर्डिंग टू डेविड टिलमैन, species richness does not help in the stability of the ecological community. Rich diversity lead to the lesser variation in a biomass production over a period of time. अगर बायोसिटी ज्यादा है तो वेरिएशन इन द बायोमास प्रोडक्शन क्या है? देयर इज अ लेस. आर यू गेटिंग? नेक्स्ट, देयर इज अनदर हाइपोथेसिस कॉल्ड एज रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस. क्या बोलते हैं इसको? रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस. इट वाज गिवन बाय अ साइंटिस्ट कॉल्ड एज पॉल एनरिक. कैन यू सी देयर इज एरोप्लेन? दिख रहा है? तो इमेजिन एरोप्लेन इज एन इकोसिस्टम. एरोप्लेन क्या है? इकोसिस्टम है. ओके, अभी ये इकोसिस्टम में कैन यू सी दिस एरोप्लेन्स आर कनेक्टेड विथ ईच अदर विद द हेल्प ऑफ व्हाट? रिवेट. क्या बोलते हैं इसको? रिवेट. सपोज अगर रिवेट मतलब एक स्पीशीज है. व्हाट इज रिवेट? एरोप्लेन क्या है? इकोसिस्टम. रिवेट क्या है? स्पीशीज. सपोज मैंने एक एक रिवेट निकालना स्टार्ट किया तो इनिशियली वो एरोप्लेन को कुछ हार्म नहीं करेगा, बट रिवेट एट स्पेसिफिक पोजीशन, फॉर एग्जांपल विंग पोजीशन, वो मैंने निकाल दिया तो इट इज गोइंग टू कॉज हार्म टू द एरोप्लेन. सिमिलरली इफ यू रिमूव द इंपॉर्टेंट स्पीशीज it will damage the ecosystem. That is called as rivet popper hypothesis. Popping of the rivet will cause harm to the aeroplane. Similarly, removal of that is main species or the what you can see the species, it will cause harm to the ecosystem. मतलब एरोप्लेन को किसके साथ कंपेयर किया है? इकोसिस्टम के साथ. और ये रिवेट्स को किसके साथ कंपेयर किया है? स्पीशीज के साथ. आर यू गेटिंग? इजी? ओके. So Paul Ehrlich and ecologists compared the aeroplane to the ecosystem and the species as a rivet. That all of the aeroplane together, there are thousands of rivets needed to hold all the parts of the aeroplane together. If the passenger decide to pop one rivet, or in the other word, if one species get extinct, initially there is no much turbulence, there is no much problem in the aeroplane. Okay, will be experienced, but popped rivet will increase, there will be serious threat to the safety of the aeroplane. So rivet at key position मतलब important position, okay, that is one behind the wing and the body of the aeroplane situation will become very serious. So loss of the species may not pose threat to the ecosystem initially, but loss of key species मतलब important species, अगर आपने उनका टॉप प्रेडेटर रिमूव कर दिया, सपोज देयर इज नो टाइगर्स, तो क्या हो जाएगा? You have disturbed what? Entire the food chain and food. Are you getting? Okay, so it will affect the food chain, food web, energy flow, natural cycle. In short, it will affect the balance of the ecosystem. Easy? Any doubt? Any query? Okay, so this is the current biodiversity scenario. दिख रहा है यहाँ पे? As per the IUCN, there are 1.5 million species have been documented. Tropical rainforest में कितना हो सकता है? 20 to 50 million variety of the species are found. Okay, Robert मैंने क्या बोला है? It may up to the 7 million species around the globe. एक्चुअल में कितना डिस्कवर हुआ है? 1.5 मिलियन, लेकिन कितना हो सकता है? 7 मिलियन. पाई चार्ट में देखो यहाँ पे, ये एग्जिस्टिंग नॉलेज है सबका. ओके, नाउ डू नॉट फाइंड एनी डेटा ऑफ द प्रोकैरियोट, मतलब इसमें बैक्टीरिया मेंशन नहीं किया है. ओके, नाउ सेवरल मोनेरन मतलब क्या है? यूनिसेलुलर यूकैरियोट, लाइक अमीबा लाइक स्पीशीज. Okay, it is not cultivated, मतलब we cannot cultivate in the lab, that is laboratory. Conventional taxonomic method are not suitable for identification of bacterial species, मतलब prokaryotic species. Okay, तो ये करंट सिनारियो देखो. ईस्टर्न घाट में 25%, सेंट्रल इंडिया में कितना? 9%, हिमालय में 10%, वेस्टर्न घाट में 1%, वेस्टर्न घाट में देखो कितना है? 26%. Are you getting? Okay, so this is all about what? That is the biodiversity. Any doubt, any query?